happened? Even this is deleted, this is deleted, this is deleted, this is deleted, and somewhere front is reaching over here. If front is reaching over here, rear is already there. If I try to pop one more, if I try to pop one more, oh yes, queue is empty. And since queue is empty, I will get the exception. You find that saying that queue is empty. But wait for a minute. If I try to push one more, then if I try to push one more, then you take a look at the diagram, and then I'm saying that even rear is already at the end. So it is saying that, oh, queue is full also. So queue is empty also and queue is full also. I'm saying that this is really stupid implementation of the memory, stupid utilization of the memory, and that is something you never want to look at. Something that you never want to look at. I guess Ashraf, you got the point. Ashraf, आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया? If your front is all at the end, then your rear is equal to front, so it will show you the empty. And that is the reason I'm saying that linear queue is not something that you ever want to use it into your actual production level code. तो सर ये प्रॉब्लम कैसे रेक्टिफाई करेंगे? How do we rectify this problem? Rectify this problem, what I'm saying is that, take a look at this. Please take a look at this. What I'm saying is that to rectify the problem, अभी rear हमारा end में, a rear हमारा end में, and we cannot add the element further. We cannot add the element further, but I understand that there is the place available over here. ए यहाँ पर तो कुछ जगह बाकी है. अगर यहाँ पर कुछ जगह बाकी है तो मुझको क्या करना चाहिए? Ideally ये rear अगर at the end है, I should take it at the start. I should take it at the start, and then somewhere I'll be able to see that, oh, this is where I can add the element. तो मैंने क्या किया? I can definitely do like that कि rear जो end में था उसको हम लोग वापस से start में लेके यहाँ पर element add कर सकते हैं. But in this case, what I done? How I incremented my rear? I incremented rear from -1 to 0, then 1, then 2, then 3, then 4, then 5, and after 5, I incremented back to 0. I incremented rear from this back to 0, and whenever you are doing this sort of increment, this is called as a circular queue. It's called a circular queue. What is circular queue? Circular queue वो होता है जहां पर आपका front and rear is allowed to be allowed to be incremented in a circular fashion. ए सर्कुलर क्यू को सर्कुलर क्यू कहते हैं. सर्कुलर क्यू को सर्कुलर इसलिए कहते हैं क्योंकि आपका फ्रंट और रेयर जो इंक्रीमेंट होते हैं वो सर्कुलर ऑर्डर में होते हैं. सो आई एम सेइंग दैट लाइक अ -1 एंड देन 0 1 2 3 4 5. तो आई एम ट्राइंग टू टेल यू दैट रेयर का इंक्रीमेंट कैसे हो रहा है. रेयर का इंक्रीमेंट ऐसे हो रहा है, -1 to 0 जा रहा है, 0 to 1 जा रहा है, 1 to 2 जा रहा है, 2 to 3 जा रहा है, 3 to 4 जा रहा है, 4 to 5 जा रहा है, और 5 से वापस से 0 जा रहा है. एंड दैट्स व्हाई इट इज कंप्लीटिंग अ सर्कल. प्लीज नोट और याद रखना इफ यू आर एब्सोल्यूट बिगिनर. तो कुछ कुछ लोग कहते हैं सर वो सर्कुलर एरे, सर्कुलर क्यू जो होता है उसमें एरे ऐसे गोल होता है. एरे कभी भी गोल नहीं होता है. एरे हमेशा लीनियर ही होता है. एरे हमेशा कंटिन्यूअस लोकेशन ही होते हैं. आपकी रैम ऐसे कुछ क्या कहते हैं बेंड करके नहीं लगाई होती है. प्लीज अंडरस्टैंड दैट. सो योर रैम इज लाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड, योर एरे इज लाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड. तो यू ऑलवेज अंडरस्टैंड दैट एरे स्ट्रेट ही होता है. हम लोग उसको सर्कुलर क्यू इसलिए कहते हैं क्योंकि रेयर और फ्रंट दे कैन बी इंक्रीमेंटेड इन अ सर्कुलर फैशन. मैं फिर से बता रहा हूं, उसको सर्कुलर क्यू इसलिए कहते हैं क्योंकि रेयर एंड फ्रंट दे कैन बी इंक्रीमेंटेड इन अ सर्कुलर फैशन. नाउ यू आस्क द क्वेश्चन, तो सर इसको सर्कुलर फैशन में अगर इंक्रीमेंट करना है तो लॉजिक कैसे लगा सकते हैं? देयर आर टू वेज दैट यू कैन पुट अ लॉजिक. देयर आर टू वेज दैट यू कैन पुट अ लॉजिक. वे नंबर वन यू कैन ऑलवेज, अगर आपको रेयर प्लस प्लस करना है तो आप लोग चेक कर सकते हो. इफ if rare is less than max, rather if rare is equal to max minus 1, then you can make it rare is equal to 0, else you can say rare is equal to rare plus 1. So I'm saying that
जो आपका सर्कुलर इंक्रीमेंट है, सर्कुलर इंक्रीमेंट का कोड कोई बहुत फैंसी कोड लिखना चाहिए ऐसी कोई बात नहीं है। यू कैन ऑलवेज राइट सच अ सिंपल कोड व्हेनेवर इट कम डाउन टू इंक्रीमेंट ऑफ द रेयर। तो जब भी रेयर को, नॉट ओनली रेयर, मैं इवन फ्रंट की भी बात कर रहा हूँ। तो जब रेयर को इंक्रीमेंट करना है, हाउ डू यू इंक्रीमेंट? नॉर्मल केस यू से रेयर इज इक्वल टू रेयर प्लस वन। सो मतलब क्या है, अगर वो -1 है तो +1 होके 0 होना चाहिए, 0 है तो +1 होके 1 होना चाहिए, 1 है तो +1 होके 2 होना चाहिए, 2 है तो +1 होके 3 होना चाहिए, 3 है तो +1 होके 4 होना चाहिए, 4 है तो +1 होके 5 होना चाहिए। आई एम सेइंग दैट ऑल द वे वी आर जस्ट फॉलोइंग द नॉर्मल केसेस। बट वेट, if it is reaching max -1, ए max -1 मतलब मेरा अगर Q 6 का है, मेरा Q अगर 6 का है तो ये पांचवा एलिमेंट, ये मेरा लास्ट एलिमेंट है। और अगर ये मेरा पांचवा एलिमेंट लास्ट एलिमेंट है, देन व्हाट आई नीड टू डू? आफ्टर 5 आई वांट टू मेक इट इक्वल टू 0। आफ्टर 5 आई वांट टू मेक इट इक्वल टू 0। दैट्स इट, दैट्स इट। सो दिस इज अ वे यू कैन डू द सर्कुलर इंक्रीमेंट। बट यू नो, ये अप्रोच बिगिनर्स को शोभा देता है, और हम लोग इंजीनियर्स हैं, तो यू नो इंजीनियर्स दे आर मैथमेटिकल एक्सपर्ट्स। यू आपको पता होगा, वो लोग M1 M2 M3 पढ़ के आते हैं, तो इतने बड़े मैथमेटिशियंस को ऐसा क्या कहते हैं, इफेल्स वाला कोड लिखना बहुत बार शोभा नहीं देता। तो सर, आप क्या कहना चाहते हो? मैं कह रहा हूँ कि व्हाई नॉट टू पुट इन लाइक अ मोर मैथमेटिकल फैशन, more mathematical fashion. And the mathematical fashion, as you write the code, see it carefully, you can go ahead with like a more mathematical fashion. And I'm writing the same code something like this: rare is equal to rare plus 1 mod by max. A rare is equal to rare plus 1 mod by max. That's it. So sir, does it work in exactly same way? I said yes, even this is working in exactly same way. ये भी ऐसे ही काम करता है। सर ये ऐसे कैसे काम करेगा? You take a look at this. Suppose that max is equal to 6. A mathematicians, M1, M2, M3 experts, please pay attention. बाद में ये मत पूछना सर ये फॉर्मूला कहाँ से आया है, ये फॉर्मूला नहीं है। मैंने कहा ना, ये बड़े बड़े इंजीनियर्स होते हैं तो उनको ये ऐसे अच्छा नहीं लगता। इफ एल्स लिखो, बोले एक लाइन में लिखो सर, एक लाइन में लिखो, एक लाइन में लिख के दिखा रहा हूँ। पे अटेंशन, पे अटेंशन, बाद में कंफ्यूज मत होना। सो सिंपल मैथमेटिक्स, इफ योर आर इफ योर आर इज -1, व्हाट विल बी इट्स नेक्स्ट वैल्यू? वो हमको ढूंढना है। इसका नेक्स्ट वैल्यू क्या होगा? ए पुट इन अ फॉर्मूला, -1 + 1 इज 0, 0 mod by 6, 0 mod by 6 is 0. Do you know that? Very good. A mod मतलब रिमाइंडर होता है। कंटिन्यू फर्दर। नेक्स्ट वन, इफ इट इज 0, a 0 plus 1, 0 plus 1 is 1, 1 mod by 6 is 1, 1, 1 plus 1 is 2, 2 mod by 6 is 2. Continue further. You is 2, 2, 2 plus 1, 3. 3 mod by 6 is again 3. Continue further. Like you have got 3, 3. 3 plus 1 is 4. 4 mod by 6 is 4. You continue further. 4 plus 1, 4 plus 1? 4 plus 1 is 5. 5 mod by 6. 5 mod by 6 is 5. Here comes the last line. 5. Have a look at this. It is a 5. 5 plus 1. 5 plus 1 is 6. 6 mod by 6. 6 mod by 6. 6 mod by 6. Remainder is 0. And then again it becomes 0. I hope now it becomes circular. So from here, you again continue back and you complete the circle. If from here, now you again continue back and you complete the circle. That is something that you can check it. Correct? तो sir, which one is better code? ये वाला ज्यादा अच्छा है, ये वाला ज्यादा अच्छा है? मैं कहूंगा आपको जो समझ में आए वो अच्छा है। वॉट एवर दैट यू फाइंड इट कंफर्टेबल। जब आप लोग खुद से लॉजिक बिल्ड करते हो, खुद से लॉजिक बिल्ड करते हो, सर मेरे को यही क्या कहते हैं, ये वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है, गो अहेड एंड डू इट। सर मुझको ये वाला अच्छा नहीं लग रहा है, बिकॉज यू नो आई एम इंजीनियर विद M1 M2 M3, गो विद दिस, चॉइस इज योर। जो समझ में आए, जो अच्छा लगे, टेक अप एंड फॉलो दैट। फिर से एक बार, व्हाई सर्कुलर क्यू इज कॉल्ड ए सर्कुलर क्यू? Why circular queue is called a circular queue? Why circular queue is called a circular queue? मैंने सर्कुलर क्यू का कोडिंग नहीं बताया, मैं आपको कंसेप्ट ही बता रहा हूं। इसको हम लोग सर्कुलर क्यू क्यों कहते हैं? बिकॉज हमारा रेयर और फ्रंट
वो सिर्फ आगे आगे नहीं जा रहा है, इट कैन बी इंक्रीमेंटेड इन अ सर्कुलर फैशन। इंटरव्यू का क्वेश्चन है, प्लीज आंसर दैट। ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है, प्लीज आंसर दैट। सो जब पूछा जाएगा कि सर्कुलर क्यू को सर्कुलर क्यू क्यों कहते हैं, सो एट दैट टाइम यू शुड बी एबल टू टेल इट वेरी क्लियरली कि वहां पर एरे सर्कुलर नहीं है, एरे तो नॉर्मली है, लेकिन उसके जो रेयर और फ्रंट ये जो है इसको हम लोग सर्कुलर फैशन में इंक्रीमेंट कर रहे हैं। नाउ जो कुछ भी हमने पढ़ा हुआ है, लेट अस जस्ट रीड इट, लेट अस जस्ट रीड इट। ये ऑलरेडी पढ़ लिया है, मैं सिर्फ बता रहा हूं अभी आपको। इन लीनियर क्यू, when rare reaches last index, further elements cannot be added, even if space is available due to deletion of the elements from front. Thus, space utilization is poor. This is a problem of the linear queue. You continue further. Circular queue allows adding elements at the start of array if rare reaches last index and space is free at the start of array, and space is free at the start of an array. So what I'm saying is that it reaches last index and space is free at the start of the array. तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, करेक्ट? ये कैसे कर सकते हैं? Thus rear and front are incremented in a circular fashion. Circular fashion मतलब 0 से लेके n-1 तक जाओ, and after n-1 you go back to 0. After n-1 you again go back to 0. That is something you do, and that is the reason it is called a circular queue. However, moment you do that, there is one small problem that you will face. What is that? The problem over is that queue full and empty conditions become tricky. So what do you mean by conditions become tricky? वो तो करने के बाद में, पेपर वर्क करने के बाद में क्लियर हो जाएगा, करेक्ट? सो कुलदीप, डोंट वरी, लेट अस डू द पेपर वर्क एंड लेट अस अंडरस्टैंड। प्लीज नोट, अभी तक मैं आपको सर्कुलर क्यू नहीं पढ़ा रहा था, अभी तक सिर्फ मैं आपको यही पढ़ा रहा था कि सर्कुलर क्यू को सर्कुलर क्यू कहते हैं। Now, since you understood that circular queue को circular queue कहते हैं, let us go ahead and let us do bit of paperwork and try to visualize how exactly the circular queue can become, how it can work. Let us take a look at this and we will try to find out कि ये full कब होता है, let us try to find out ये empty कब होता है, ये जो possible permutation combinations है, ये सारे permutation combinations हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। Please pay attention. तो let's get started. तो सर ये नीचे आपने सर्कल वाला क्यों ड्रॉ किया है? ये कुछ-कुछ लोगों को विजुअलाइज़ करने के लिए सर्कल अच्छा लगता है, कुछ-कुछ लोगों को एरे अच्छा लगता है। आपको जो करना है वो करो, इट इज़ जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। मैं फिर से बता रहा हूँ, एरे गोल नहीं होता है, एरे हमेशा स्ट्रेट ही होता है, करेक्ट? नहीं तो सर आपने उसको बेंड कर दिया, ऐसा मैंने बिल्कुल नहीं किया है, अंडरस्टैंड दैट। तो लेट्स जस्ट गो अहेड, वी हैव गॉट रेयर एंड वी हैव गॉट फ्रंट। ए रेयर भी है, फ्रंट भी है। लेट अस कंटिन्यू फर्दर एंड लेट अस स्टार्ट एडिंग द एलिमेंट्स। लेट अस स्टार्ट एडिंग द एलिमेंट। मैं आपको पहले प्रॉब्लम बताऊंगा और बाद में प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अलग से डिस्कस करेंगे। डू नॉट मिक्स अप एवरीथिंग। हम लोग आराम से जा रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं। बहुत आगे आगे भागने की कोशिश प्लीज मत करना, आराम से पढ़ते हैं। हाँ, सो इंक्रीमेंट रेयर, you add the element. Increment rare, you add the element. Increment rare, okay, you add the element. Increment rare, you add the element. Okay, that is great. जो हमने लास्ट टाइम देखा था, हाउ डू यू डिलीट द एलिमेंट? वो डिलीटिंग एलिमेंट इज वेरी सिंपल, इंक्रीमेंट फ्रंट as good as this is gone, increment front, and again this element is deleted. I want to still want to add the elements. Oh, continue further. You want to still add the element. Take a look at this. Still add the element. Increment rare. Add the element. Increment rare. Add the element. I want to add one more element. May I? I want to add one more element. May I? क्या ऐड हो सकता है यहाँ पर? एब्सोल्युटली, क्या करो, गो अहेड। अभी ये सर्कुलर क्यों है? सो लास्ट के बाद में, A5 के बाद में, मेक इट वंस अगेन 0 एंड ट्राई टू ऐड द एलिमेंट देयर। ओके, दैट इज ग्रेट। यू कंटिन्यू फर्दर, अगेन यू से रेयर प्लस प्लस एंड यू कैन ऐड इवन वन मोर एलिमेंट। टेक अ लुक एट दिस एंड टेल मी, कैन आई ऐड वन मोर एलिमेंट? Can I add one more element? Not really. I see that the queue is full. A queue is full. When queue is full, you are able to see the diagram. When queue is full, you are able to see the diagram. The queue is full when the rear is equal to front. इसको सिर्फ याद रखना। मैं वापस से इसके ऊपर आऊंगा, कोड में अलग से लिखेंगे, लेकिन अभी के लिए मैं आपको बता रहा हूं
कि प्रॉब्लम कहां पर होता है। सो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। जिसने प्रॉब्लम ही नहीं देखा है उसको सॉल्यूशन बता के क्या फायदा है। सो मैं आपको पहले प्रॉब्लम दिखा रहा हूं। लेट अस कंटिन्यू फर्दर। लेट्स से डिलीट द एलिमेंट। लेट मी डिलीट द एलिमेंट। Let me delete the element. You increment this get deleted. You increment this. Oh, 44 is now deleted, gone. You increment this, 55 is deleted. That is fantastic. You want to delete the element, increment it, 66 get deleted. Okay, that is great. You want to again increment front. Look at this. Increment front, even 77 get deleted. Let me delete one more, 88 get deleted. I want to delete one more. I want to delete one more. One more. I have to delete one more. What do you see? Oh, Q is empty. By the way, when Q is empty, see the condition? What is when Q is empty? Oh, again you are saying that front is equal to rear. अब राडा हो गया सर फ्रंट इज इक्वल टू रेयर में क्यू एम्प्टी होता है या फुल होता है both are actually same condition and this is something makes now this is the meaning of this line. This is the meaning of this line. However, q full and empty conditions become tricky. क्योंकि अब आप लोग कोड में कैसे लिखोगे क्योंकि अगर आपने फ्रंट इज इक्वल टू रेयर लिखा फ्रंट इज इक्वल टू रेयर लिखा तो उसको क्या लगेगा यार ये तो फुल हो गया और फ्रंट इज इक्वल टू रेयर वो उसको लगेगा ये एम्प्टी भी हो गया अब थोड़ा सा राडा है अब थोड़ा सा राडा है तो हमें क्या करना पड़ेगा हमें शायद मल्टीपल पॉसिबिलिटीज या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस चेक करने पड़ेंगे कोई बात नहीं मैं आपको करके दिखाता हूं हम लोग सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चेक करके देखेंगे एंड वी विल डू इट वन बाय वन let me let me first talk about full condition. Let us talk about one thing at a time. Let us talk about one thing at a time. Let us not mix up everything together. Give me a minute. पहले मैं क्यू फुल की बात करता हूं मैं क्यू फुल की बात करता हूं और क्यू फुल we will discuss probably in two different ways. Pay attention. So मैं बात कर रहा हूं क्यू फुल की क्यू फुल कंडीशन की see it carefully. I want to add the element. How do you add the element? It is a very easy job. You people know that. A rare को प्लस प्लस करो you add the element. Rare को प्लस प्लस करो you add the element. Rare को प्लस प्लस करो you add the element. Rare plus plus you add the element. So you know adding logic is pretty simple. Rare plus plus add the element. Rare plus plus add the element. Now can I add one more element? Can I add one more element or not really possible? So not really possible. I can simply say that the queue is a queue is empty. Sorry, queue is full. It is a condition where I see queue is full. Yes, I am able to see that queue is full. Let us just continue further. Let us continue further and let us talk in this context. ये जो अगला वाला डायग्राम दिख रहा है, let us focus on to that. यही डायग्राम मैं यहाँ पर फिर से एक बार ड्रॉ कर रहा हूँ and let me tell you the second scenario. A 10, 20, 30, 40, 50, 60 and front यहाँ पर है, rear यहाँ पर है. Let's say that I have deleted 2-3 elements. ये 2-3 element delete करने हैं. How do you delete the element? How do you delete the element? Yes, you say front plus plus, front plus plus, this is gone. And you want to delete one more, front plus plus, and this is gone. And if you want one more, you can, like a this is deleted. Hey, wait for a minute. Ab, let me add the element. Let me add the element. Let me add the element. Rare plus plus, a rare plus plus, I added 70. Rare plus plus, I added 80. Rare plus plus, I added wait for a minute, something went wrong. 2 minute, 2 minute, 2 minute. Rare plus plus, and then you added even 90. All right? And then again I see that the queue is full. I hope I am able to see that the queue is full. Are you able to see that? तो मुझको क्यू फुल यहां पर दो सिनारियोज में मिल रहा है. आई होप आपको ये डायग्राम दिख रहा है. सो क्यू फुल आई एम एबल टू सी
in two different scenarios. The scenario number one, will you please let me know what is scenario number one? जहां पर Q full हो रहा है, I can say that front is equal to minus one and rear is equal to max minus one. Am I correct? Is it valid? Front is equal to minus one and rear is equal to max minus one. So this is a scenario which is telling me that the queue is full. The second one, take a look at this. What about this? The second condition. The second condition, which is very clearly telling me that front is equal to rear. Second condition very clearly telling me that front is equal to rear. Front is equal to rear, and that is telling me that the queue is full. But wait for a minute. Wait for a minute. Just give me a minute. Give me a minute, and let me tell you. Tell me in this particular condition, whether queue is full, whether queue is empty. In this condition, whether queue is full, whether queue is empty. Queue is empty. Have you noted something? Have you noted something? Have you noted something? Oh, front is equal to rear. एक बार अभी अभी आपने बोला था front is equal to rear का मतलब it is full. No, please understand that when both are at minus one, if both are at minus one, we can say that it is empty. If both are at minus one, we can say that it is empty. So what I'm saying is that if front is equal to rear and and it is not equal to minus one and it is not equal to minus वन, तो वो इक्वल है लेकिन इक्वल माइनस वन पे इक्वल नहीं है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दोनों इक्वल है लेकिन माइनस वन के ऊपर इक्वल नहीं है, देन आई कैन से दैट इट इज फुल कंडीशन. आर यू गेटिंग दिस? दोनों इक्वल है, फ्रंट इज इक्वल टू रेयर है लेकिन वो माइनस वन पे इक्वल नहीं है, देन आई कैन से दैट इट इज फुल. तो फुल होने के दो पॉसिबिलिटीज है. ये फुल होने की दो पॉसिबिलिटीज है. Possibility number one, possibility number one that you see it there. Possibility number one, left side वाला condition. Possibility number two, ये right side वाला condition. This is a condition for Q full. And what is the condition for Q empty? So can you please tell me what could be your condition for Q empty? चलो बोलो फटाफट, अभी आपके सामने condition दिख रहा है. Oh yes, absolutely correct. You simply say that again rear is equal to front, rear is equal to front, but it is at minus one. But this is at minus one. आप फ्रंट को माइनस वन लिखो, रेयर को माइनस वन लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता. मैं कह रहा हूं कि दोनों सेम है, दोनों सेम है, लेकिन वो माइनस वन के ऊपर जब दोनों सेम है, then I can say that my queue is empty. My queue is empty. That is good enough? Absolutely. Now, can you just quickly tell me the logic of push also? फटाफट अभी पुश का लॉजिक बता दो, अब भाव मत खाओ. What is the logic for push? What logic for push? Increment rear and add the element. It was very easy. But increment rear in a circular fashion. Don't forget that. So I can simply say rear is equal to rear plus one mod by max. हम लोग engineers हैं. Rear is equal to rear plus one mod by max and simply say ARR of rear is equal to value. Do you believe that this is correct logic? Is it a correct logic? Yes. पुश के लॉजिक में हमें कोई बड़ा तीर नहीं मारना है, कोई भी बड़ा तीर नहीं मारना है. इट इज वेरी इजी, वेरी सिंपल, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. पॉप के लॉजिक में एक छोटा सा ट्रिक इन्वॉल्व है, छोटा सा ट्रिक इन्वॉल्व है. प्लीज पे अटेंशन. पॉप के लॉजिक में एक छोटा सा ट्रिक इन्वॉल्व है. हाँ, यस डेफिनेटली. बेसिक पॉप लॉजिक इज स्टिल सेम. ए बेसिक पॉप लॉजिक हैज टू बी फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट प्लस वन मॉड बाय मैक्स. ए इसका भी तो सर्कुलर इंक्रीमेंट होना चाहिए. डेफिनेटली you do the circular increment, this is always there, ये तो होने ही वाला है. Let us take some example. Pay attention. Let us take some example जहां पर मैं इसको करके देखता हूं और फिर मैं आपको बताता हूं कि what probably goes wrong, or goes wrong in the sense not really wrong, but what you need to take care. This is front, this is rear, and let's say that
I have added some elements. I've added some elements, Let's say it's 10, 20, 30, 40. See it carefully. Please pay attention. I'm deleting the element. How do I delete the element? How do I delete the element? Yes, front plus plus in a circular fashion. So front plus plus and this element is gone. Okay, this is gone. Again, front plus plus, pay attention. Front plus plus and this element is gone. Pay attention. Front plus plus and this element is gone. Wait, फ्रंट प्लस प्लस ये चौथा वाला मैं फ्रंट कर रहा हूं सो वापस से फ्रंट प्लस प्लस एंड देन दिस एलिमेंट इज गॉन and moment I deleted this element I find that front becomes rare. Moment I deleted this element I find that front becomes rare. But front becomes rare equal to rare, what is the meaning of this? अरे ये तो अपना कंफ्यूजन वाला कंडीशन है. कंफ्यूजन वाला कंडीशन कौन सा था? ये फुल है या एम्प्टी है? यस, ये वाला कंफ्यूजन वाला कंडीशन है. लेकिन हम लोगों ने एम्प्टी का कंडीशन क्या डिसाइड किया है? What is our empty condition? Our empty condition simply says that कि it is दोनों equal होने चाहिए, लेकिन -1 पे अगर equal होंगे then and only then it is going to work. तो let us play a trick. Let us play a trick. When this is becoming equal, when this is becoming equal, make both of them again back to the -1. Make both of them again back to the -1. Make front is equal to -1 and make rear is equal to -1. This is something that you can do it. This is something that you can do it. The end, nothing extra has to be done. So this is a trick to be played. क्योंकि अगर हम लोगों ने ये ट्रिक यहाँ पर नहीं प्ले किया तो वापस से कंफ्यूजन वो हो ही जाएगा. सर फुल कब होगा, एम्प्टी कब होगा? तो मैं क्या कह रहा हूँ, व्हेन आई एम डिलीटिंग एलिमेंट, आफ्टर डिलीटिंग ईच एलिमेंट आई एम चेकिंग कि जो डिलीट किया था वाज दैट द लास्ट एलिमेंट. अब जो डिलीट किया था इन अवर केस दैट 40 वाले केस में, if that was the last element, then I understand, oh, it was the last element, so immediately just make front and rear is equal to -1. And if you make that front and rear equal to -1, I can simply say that अब कोई कंफ्यूजन नहीं है. तो एम्प्टी का कंडीशन हम लोगों ने फ्रोजन कर दिया. इट इज फ्रंट इज इक्वल टू रेयर एट -1. और फुल का कंडीशन फ्रंट इज इक्वल टू रेयर बट नॉट इन -1. Is this clear to everyone? So all permutation combinations that we talked about, now it's only time to go back and type the code quickly. Go back and type the code quickly, and it can be simply even a kind of copy paste kind of code. It should be. Let me just go back and let me create a new project. File, new, Java project. Good. Next, and you are calling it as circular queue. Next, finish. All right. Yes, we have got circular queue, and inside circular queue, let me create a new package. And inside package, ये जो linear queue का code था, मैं literally copy paste कर रहा हूँ, not to waste time in typing each and every line once again. I just call it as a circular queue. All right, now it is circular queue. Let us go back and do the necessary changes in a circular queue. Let us do the changes in a necessary changes in a circular queue. It is not linear queue. You are calling it as like a circular queue. Okay, you call it a circular queue. So linear queue को मैंने circular queue में convert कर दिया है. And let us go there and start writing a code one by one. How you talking about condition? So what is your condition? Condition of full. जो सबसे मुश्किल वाला था वही से शुरुआत करते हैं. What is the condition? The front is equal to front. अरे front equal to -1 and rear is equal to max -1. Max -1. This is like one condition in which you are saying that queue is full. और the second possible condition जहां पर हम लोग कह रहे हैं front is equal to rear but not at -1, not equal to -1. Like another one कि this space I can say that yes, queue is full. Okay, that is good. Second thing, what about empty condition? Empty condition is again same. The front is equal to rear. A front is equal to rear, but
the front is equal to rear at equal to -1. If front is equal to rear at -1, this is nothing but the empty condition. चलो ये भी अपने जगह पे आ गया है, not a problem. You continue further. What is the logic of push? Well, logic of push was very simple. Rear, you want to increment it in a circular fashion. Circular fashion. So arrow dot length, and then you add the element there. It's very easy. Pop condition. Pop condition, that was like a tricky one. The front is equal to front plus 1 mod by arrow dot length, and after you incremented front, you want to check if front became equal to rear. It only means that it was the last element that you deleted. Simply reset the front and rear equal to -1. Reset front and rear equal to -1 is done. Okay, you continue further. Or like a pick, the pick condition, यहाँ पर वैसे भी हमें नेक्स्ट एलिमेंट ढूंढना है. ओके, आपको नेक्स्ट एलिमेंट ढूंढना है, कोई बात नहीं. सो द नेक्स्ट एलिमेंट, आई एम सिंपली सेइंग दैट फ्रंट प्लस 1 मॉड बाय लेंथ. ए दैट इज नथिंग बट योर सर्कुलर नेक्स्ट फ्रंट वो वाला होगा. तो आई एम नॉट मॉडिफाइंग फ्रंट, आई एम जस्ट टेकिंग इट एन इंडेक्स वेरिएबल, एंड दैट इंडेक्स का एलिमेंट मैं चेक कर रहा हूं. दैट्स इट. एंड नाउ दिस बिकेम अ काइंड ऑफ अ सर्कुलर क्यू. तो सो डू यू वांट टू से दैट अब यहाँ पर मेमोरी यूटिलाइजेशन प्रॉपर होगा? 100% आई वांट टू से दैट मेमोरी यूटिलाइजेशन प्रॉपर होगा. लेट अस जस्ट चेक. डायग्राम अगर आप लोग विजुअलाइज कर सकते हो तो विजुअलाइज कर लो, ड्रॉ कर सकते हो तो ड्रॉ कर लो, विच एवर वे. आई एम जस्ट ट्राइंग इट आउट. नम्रता, पीक इज नथिंग बट डिलीटिंग द नेक्स्ट एलिमेंट. पीक इज नथिंग बट डिलीटिंग द नेक्स्ट एलिमेंट, जहां पर हमको फ्रंट को मॉडिफाई नहीं करना होता. तो हम लोगों ने सीधा क्या किया है, फ्रंट को सर्कुलर इंक्रीमेंट करके जो वैल्यू आता, फ्रंट को सर्कुलर इंक्रीमेंट करके जो वैल्यू आता, प्रोबेबली ये वाला वैल्यू आता, फ्रंट प्लस 1 मॉड बाय दिस. तो हम लोग उसको फ्रंट को असाइन नहीं कर रहे, हम उसको एक वेरिएबल में असाइन कर रहे हैं कि दिस इज माय नेक्स्ट इंडेक्स ऑफ फ्रंट, एंड इफ दिस इज माय नेक्स्ट इंडेक्स ऑफ फ्रंट, उस नेक्स्ट इंडेक्स का एलिमेंट जो भी है, दैट एलिमेंट वी आर रिटर्निंग. गॉट इट? इट इज एग्जैक्टली सेम. सिर्फ हम लोग यहाँ पर डिलीट नहीं कर रहे हैं. ये जो फॉर्मूला मैंने ऊपर लिखा था, प्लीज नोट दैट दिस लाइन एंड दिस लाइन इज क्वाइट सेम, क्वाइट सेम. बट इस लाइन में हम लोग फ्रंट को मॉडिफाई कर रहे हैं. हम लोग यहाँ पर सिर्फ अगला वाला इंडेक्स ले रहे हैं, और उस अगले वाले इंडेक्स में हम लोग सिर्फ रिटर्न कर रहे हैं. यस, वी आर ओनली फेचिंग, वी आर नॉट पॉपिंग इट. दैट इज व्हाट द कंसेप्ट ऑफ पिक वाज ऑल द टाइम. चलो आप लोग डायग्राम कर रहे हो. 1 10 1 20 1 30 push 40 push 50 push 60. आप लोगों ने डायग्राम बना लिया. 6 का my queue is of 6, 10 20 30 40 50 60. Now can you tell me, if I try to push one more, what will happen? 10 20 30 40 50 60, 60 तक push हो गया है. If I try to push one more, 70, yes, queue is full. And you go back to the diagram. According to the diagram, I guess this is my current scenario. I hope you agree. अगर आपने अभी डायग्राम बना लिया है, तो आई गेस आप लोग यही डायग्राम के ऊपर पहुंचे हो कि फ्रंट अभी भी -1 के ऊपर है, एंड एज यू आर एडिंग द एलिमेंट, एवरी टाइम आपका रेयर इंक्रीमेंट हो रहा है, एंड यू रीच टू दिस सिनेरियो. ओके, नो प्रॉब्लम. लेट मी गो अहेड, लेट मी डिलीट 3 एलिमेंट्स फ्रॉम दिस. नाउ टेल मी, अगर मैं डिलीट करूंगा, 3 एलिमेंट डिलीट करूंगा, तो कौन से डिलीट होंगे? आई एम जस्ट ट्राइंग टू डिलीट 2. विच वन इज डिलीटेड? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. 10, yes, 10 is out. और एक डिलीट, और एक डिलीट. 20, yes, 20 is out. एक और डिलीट, एक और डिलीट. 30, even 30 is out. So out of 6, 3 elements are deleted. 3 elements are deleted. मतलब ये 3 spaces खाली हो गया है. Let me go ahead and let me start pushing the element. Now can I push 70? ये चलेगा? Will it work? Yes, it should work. Yes, 70 is added. One more, 80 is added. One more, 90 is added. ये 3 मैंने डिलीट किए थे, 3 मैंने ऐड कर लिया. Should I, if I try to push one more, now will it work? No, this will give me the exception saying that queue is full. And if I'm not mistaken, this is exactly this diagram that you people have reached. Am I correct? 40, 50, 60, 70, 80, 90, यहाँ पर हम लोग पहुंच गए, and now this is a condition due to which my queue is getting full.
सो मैं जानबूझ के मैं वही वैल्यूज डाल रहा हूँ जो मैंने आपको डायग्राम में एक्सप्लेन किए, सो दैट यू अंडरस्टैंड दैट यस थिंग्स आर गोइंग इन सिंक। ऐसा नहीं कि कुछ भी यहाँ पर अलग वैल्यूज वहां पर अलग वैल्यूज, नहीं नहीं, लेट अस गो सिस्टमेटिक वे, लेट अस गो इन डिसिप्लिन्ड वे। ओके, दैट इज गुड, नो प्रॉब्लम, लेट मी गो अहेड, लेट मी गो अहेड। एंड अभी 6 वैल्यूज, एक मिनट, अभी इसके अंदर टोटल 6 वैल्यूज है, 70, 80, 90। इफ आई डिलीट द नेक्स्ट एलिमेंट, व्हाट विल गेट डिलीटेड? इसमें से अगर मैं नेक्स्ट एलिमेंट डिलीट करता हूं तो क्या डिलीट होगा? 40 will be deleted. Okay, let's check. Yes, 40 is out. और एक delete. One more delete. 50 is out. One more delete. 60 is out. One more delete. Please note, रेयर आपका इंक्रीमेंट होते 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 एंड तक पहुंच गया है, सॉरी फ्रंट इंक्रीमेंट होते होते एंड तक पहुंच गया है। नाउ वन मोर डिलीट, इट विल गो बैक सर्कुलर फैशन एंड इट विल ट्राई टू डिलीट दैट। लेट्स से 70 is out. Okay, next. One more delete. 80 is out. And one more delete. Wait for a minute. अगर हेलो, हैव अ लुक एट दिस, अब आई गेस रेयर आपका यहां पर होगा और ये एलिमेंट्स अभी तक डिलीट हो चुके हैं, ऑल दीज एलिमेंट्स आर ऑलरेडी गॉन। नाउ व्हाट आई एम डूइंग नेक्स्ट, जैसे ही मैं एक और बार रेयर को इंक्रीमेंट करूंगा, और एक बार रेयर को इंक्रीमेंट करूंगा, दिस एलिमेंट, सॉरी माय मिस्टेक, front is over here, front is over here, and all these elements are now deleted, all these elements are already deleted। अगर मैं एक और बार इसको इंक्रीमेंट करूंगा, अगर इंक्रीमेंट करूंगा और ये डिलीट हो जाएगा, what will happen? Oh, but the front and rear, they will become equal, and if they become equal, we have written a piece of code which is saying that reset them to -1, reset them to -1, so that they will go back to the starting position. Let's go back and trying to delete it once again. And yes, 90 is deleted, but 90 is deleted, they are automatically reset to -1. And if I try to delete one more, and now if I try to delete one more, yes, queue is empty, it should show me. I believe the things are going well and you people are understanding it well, correct? Why don't you copy paste, run it, and check whether it is working well for you, right?